Hello and welcome. You're watching Who's Winning 2024 powered by Statistically. Speaking, we are bringing you People's Pulse, and the state that we are focusing on today is Himachal Pradesh. Now, the general elections in Himachal Pradesh will occur in a single phase. The seventh and the final phase is when the election takes place, which is on the 1st of June. This phase will include voting for its 4 seats, which are Kangra, Mandi, Hamirpur and Shimla. Himachal Pradesh has been a swing state when it comes to the general elections. Voters have majorly alternated between the BJP and the Congress. Now, during the 2014 and the 2019 Lok Sabha elections, the BJP secured a clean sweep in the state. It won all the 4 seats. In 2019, it was the Saffron Party that managed a mammoth 69.11% seat share in the state. But the Congress defeated the BJP by a wide margin. In the 2022 Assembly election, it won 40 of the 68 seats. In 2024 Lok Sabha elections, BJP is eyeing a third consecutive clean sweep in the state. Besides that, the party is also going all out to secure a win on the 6 assembly seats, which had fallen vacant after disqualification of many Congress MLAs. Besides contesting the 2024 general election, the Congress, which is currently in a crisis, is hoping to maintain its dominant position in the state assembly by winning as many seats as possible. NewsX held a survey to understand the key poll issues for the people of Himachal Pradesh. Let's quickly take a look at what our sample sizes say, what our surveyors say, who is it that the public is swaying towards. In fact, the first question in the 5-question survey that we put out for our viewers to take was the biggest issue that the people faced in the Lok Sabha election. Well, at 20%, development was amongst the many number of issues that the people voted for. There was inflation at 17%, corruption at 8%, but with the largest percentage of the vote, which is at 46%, unemployment was the number one issue on the basis of which they are going to cast their election. 9% of the people would not cast their polls on any of the above mentioned reasons. Question number 2 that we asked our poll takers: on what basis will you cast your vote in the Lok Sabha election? Well, people said that it is 30% of the people said that they will cast their vote on the basis of the party that they found themselves influenced by. 13% of the people said that they would cast their vote on the basis of the candidate who is being fielded from that constituency. Well, 0% of the people said that they would be voting on the basis of caste. 56% of the people said that they would vote on the basis of the work done. Well, a very marginal 1% have said that they will not vote on the basis of any of these 4 categories. How has Narendra Modi performed as the Prime Minister? Well, 22% of the people who have taken this survey say that Narendra Modi has performed averagely as the Prime Minister. 38% people say that Narendra Modi has performed reasonably well as the Prime Minister. 32% of the people say that Narendra Modi has performed exceedingly well as the Prime Minister. 8% of the people can't make up their mind. The fourth question that we asked the viewers, asked the people of Himachal Pradesh: how will the Modi factor work in Lok Sabha election? Well, 12% feel that the Modi factor will work averagely. 32% of the people feel that it will work reasonably well, while 35% of the people feel that it will work very well. 19% of the people feel that Modi factor will not really work for the upcoming election. 2% can't make up their mind. Finally, question number 5. Who do you think will form the government in 2024? Well, 61% of the people feel that NDA is going to form the government in 2024. 29% of the people from Himachal Pradesh have voted for the India alliance to make the government. Government with regional alliances, well, only 2% of the people of Himachal Pradesh feel, who have taken this survey, that the government with regional alliances will come to power. And a marginal 8% feel they don't have an opinion on this matter. Now, moving on, let's start my conversation. I have with me the BJP spokesperson, I have with me the Congress spokesperson. I'm going to start with Vivek Sharma, BJP spokesperson. Quickly getting a word from you about what are the chances that the BJP sweeps the Himachal Pradesh
Lok Sabha elections this time around as well? नमस्कार। लगभग हमारी स्थिति ये है कि हमने अपने लगभग सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, चारों की चारों लोकसभा सीट्स के। और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट्स के साथ साथ कुछ विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने जा रहा है। और हमारे लगभग 17 विधानसभा क्षेत्र एक पार्लियामेंट में आते हैं हिमाचल प्रदेश में, और हमारे प्रत्याशी लगभग एक दौरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के ऊपर। लगभग हमारी विधानसभा से लेकर के हमने अपने बूथों तक की समितियां बना दी हैं। वहां हमारे वर्कर एक्टिवेट हैं एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी प्रॉपर मैनर एंड होपफुली वी आर क्वाइट बेटर देन कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई है और हमारे प्रत्याशियों का लगभग एक एक दौरा हमने अपने क्षेत्रों का कर लिया है और इसको लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं। हमें नीचे से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारा कार्यकर्ता फुली चार्ज्ड है, दे आर रेडी टू वर्क और मोदी जी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है और लगभग हम सारे काम को लेकर के आश्वस्त हैं। हमारा वर्कर फुली मोबिलाइज्ड है और हमने अपने लगभग सारे बूथों पे हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोकसभा का चुनाव लोकसभा पे नहीं लड़ेंगे, हमने लगभग हर बूथ पे चुनाव लड़ना तय किया है और उसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक हमें खबर मिल रही है कि कांगड़ा से, जहाँ पे बीजेपी ने मूवी स्टार कंगना रनौत को फील्ड किया है, इसी सीट से शायद कांग्रेस विक्रमादित्य को फील्ड करे। अब ये एक टाइट चैलेंज दिखाई दे सकता है बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, ये एक्चुअली कांगड़ा सीट नहीं है, दिस इज अ मंडी लोकसभा सीट। सॉरी, यस, द मंडी लोकसभा सीट, बेग योर पार्डन, यस। अब कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी, जब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर देती ऑफिशियली, तब तक कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। स्पेकुलेशंस में बहुत से लोगों के नाम आते हैं, विक्रमादित्य जी का भी नाम आ रहा है, उनका भी स्वागत है, कोई और आएगा तो उनका भी स्वागत है। हम तैयार हैं और हम बड़े आश्वस्त हैं कि हम वो सीट एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब जब देखा जाए, आपने असेंबली इलेक्शंस की बात छेड़ी है, तो ये भी देखा जाए, आपने बोला बहुत सारी सीट्स वेकेंट भी हैं जब से वो डिफ्लेक्शन हुआ, जहाँ पे डिफेक्शन हुआ काफ़ी सारे एमएलएस का बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे अब बात करें हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस की, तो ये एक स्विंग स्टेट माना जाता है। कांग्रेस ने पिछली बार इस स्टेट को जीता था। अब क्या कांग्रेस की जीत जो कि इस सीट से हुई थी, इस स्टेट से हुई थी असेंबली इलेक्शन में, क्या ये रिफ्लेक्टिव हो सकती है लोकसभा के रिजल्ट्स में भी? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस कुछ ऐसी गारंटियां लेकर गई जनता के बीच में विच वर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और वाइबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद उन्होंने वोट हासिल कर लिए। उसी सारे घटनाक्रम की वजह से इनके भीतर एक भयंकर अंतर्कलह उत्पन्न हुई। वो अंतर्कलह बाद में लाचारी पे चली गई। लाचारी में जाने के बाद इन्हीं के ही जो विधायक थे, या जो इनके साथ कुछ 2 या 3 निर्दलीय विधायक थे, उन लोगों ने इनसे अपना मुंह भंग किया। राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनको दिखाकर वोट डालते हैं और उसके बाद ये सारा सिस्टम प्रारंभ होता है। अंततः वो सारे विधायक त्याग पत्र देते हैं और वो कांग्रेस छोड़ने का मन बनाते हैं और वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा ने उनमें से कुछ लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है और हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं और विधानसभा के चुनाव के पश्चात लगभग ये सरकार गिर जाएगी, ये भी सुनिश्चित है। 4 मई को लगभग यहाँ 2 नतीजे निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी जाएगी और केंद्र में हमारी सरकार आएगी और अनुमानित है कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी। Okay. जो GS Tomar, Congress spokesperson, is also on the telecast. GS Tomar, with regards to some of the assembly seats that need to also be filled, and on top of it is the Lok Sabha election, 4 of the important seats that are going to make a difference, particularly for the Congress. And here you see that Vikramaditya Singh may be contested against Kangana Ranaut, who is a BJP star candidate from Mandi. We had also seen disgruntlement from Vikramaditya Singh and Pratibha Singh when there was a complete breakup
breakdown that happened within the Congress. How do you picture Vikramaditya Singh as a factor that we will help you win the Lok Sabha votes in Himachal, in Mandi? न्यूज़ के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। आज जो मेहमान जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी सभी चारों सीटों पर जो है मजबूत प्रत्याशियों को उतारेगी और 13 अप्रैल को लगभग ये सूचना हमारे पास है कि 13 अप्रैल को चारों सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। उससे पहले जैसा आपने कहा कि मंडी की अगर बात की जाए तो जो भी नाम मंडी के लिए जो भी प्रत्याशी हाईकमान से तय किया जाएगा वो विक्रमादित्य सिंह जी हो सकते हैं, रानी प्रतिभा सिंह जी हो सकते हैं। जो भी प्रत्याशी होगा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने 15 महीने काम किया है और 15 महीनों में जो 5 गारंटियां पूरी की है और जिस तरह से इन गारंटियों का लोगों को ये लाभ मिलेगा और लोगों को अभी पता लगा है कि प्रदेश सरकार किस तरह से सकारात्मक तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव में भी इसका फायदा होगा और विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर भी अपना असर करेगी, क्योंकि हमने 40 सीटों के साथ जो है कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने में सफल रही थी। जहां तक इन लोकसभा सीटों की अलग अलग बात है, बहुत जल्दी हम लोग जो हमारी हाईकमान है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगा। रही बात आज तक जो फिलहाल जो हमने देरी की या जो टाइम लग रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि हिमाचल में 1 जून को लोकसभा का चुनाव होना है, उसके लिए हमारे पास भरपूर समय है और वो लास्ट चरण में जो है 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव हिमाचल में होगा, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। देखा यह भी जाता है कि जब भी लोकसभा या प्रदेश में चुनाव होते हैं, असेंबली के चुनाव होते हैं, तो उसके लिए जो है 15 से 20 दिन का जो समय होता है, उस समय जो है प्रचार के लिए पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। लेकिन जो प्रदेश सरकार ने इन 15 से 16 महीनों में काम किया है और जिसके चलते जो विपक्ष जिस तरह से अपना जो रूप और अपना जो चरित्र इन्होंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर और सरकार को गिराने में जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हिमाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं। उसका असर मंडी में भी होगा, कांगड़ा में भी होगा, हमीरपुर में भी होगा और शिमला संसदीय सीट पर भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर चल रही है और इनकी ये, हम तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जब तक काम करती है उनका ये गारंटी रहती है कि हम रोजगार की गारंटी देते हैं, महंगाई से बचने की गारंटी देते हैं, हम लोगों को जो है विकास की गारंटी देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो महज जो है एक जीत की गारंटी देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएस तोमर जी, यहाँ पे अगर हम एक प्रेसिडेंट जो सेट हो गया है 2019 में, सारे के सारे जो हिमाचल प्रदेश की सीट थी वो बीजेपी को प्राप्त हुई थी, बीजेपी ने ये सब जीत ली थी। क्या अब कांग्रेस ऐसा क्या अलग कर रही है कि वो ये चारों की चारों लोकसभा सीट्स को वापस बीजेपी से ले ले? देखिए, ये कुल मिलाके मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 15 महीने का जो कार्यकाल रहा, उस समय हिमाचल में जो है बरसात में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, भारी रेन हुआ, भारी बारिश हुई, उसके चलते जो हिमाचल में लगभग 450 लोगों की जान गई, हजारों करोड़ रुपए का जो हिमाचल की धन संपदा को नुकसान हुआ। उस समय केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो हमारे हिमाचल जो सांसद रहे, अनुराग ठाकुर जी रहे, सुरेश कश्यप जी रहे और किशन कपूर जी रहे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस तरीके से, जिस तरह से हिमाचल के लोग उनसे उम्मीद बांध के बैठे थे कि दिल्ली में एक मजबूत सरकार के ये दावे करती है भारतीय जनता पार्टी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि उनका दूसरा घर जो हिमाचल भी है, वो हिमाचल को भी अपना मानते हैं। जेपी नड्डा जी वहां पर है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसे बड़े बड़े जब पद पे बैठे लोग हिमाचल से हैं, उसके बाद हिमाचल को निराशा हाथ लगे, यहाँ के लोगों को जो है प्राकृतिक आपदा के हवाले छोड़ दिया, तो हिमाचल प्रदेश को ये लग गया कि ये लोग जो है सिर्फ चुनाव के दौरान जो है जुमलेबाजी करते हैं। ओके, पर यहाँ पे तोमर जी एक और बात बताइए, आपकी जो इंटरनल डायनामिक्स है हिमाचल प्रदेश की, आपके जो पार्टी मेंबर्स की, जो पार्टी लीडर्स की डायनामिक्स है, वो भी यहाँ पे कुछ डगमगाती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरफ जब आपकी गवर्नमेंट खतरे में थी, आपके कितने सारे एमएलएस तो बीजेपी में डिफेक्ट हो गए, उसके बाद पता चला कि विक्रमादित्य सिंह ने भी काफ़ी ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए कि वो पार्टी हाईकमांड से नाखुश हैं। पहले भी जब इलेक्शन जीते गए थे कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे प्रतिभा सिंह ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि वो चाहती थी कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो अब ऐसी एक
धारणा बन गई है लोगों के बीच कि कांग्रेस के अंदर सब सही नहीं है, कांग्रेस के अंदर एक यूनिटी नहीं है, तो इसका क्या असर होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमें इसका फायदा मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के बाद और कई अन्य राज्यों में, इन्होंने मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में जो इन्होंने सरकारों को तोड़ने का काम किया है, उसका जो असली चेहरा हिमाचल में भी देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पर इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति, यहाँ पर आपराधिक राजनीति, यहाँ गुंडागर्दी की राजनीति, धोखाधड़ी की राजनीति हिमाचल में नहीं होती है। ये देवभूमि है, यहाँ पर सत्य पक्के पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ईमानदारी से जो लोकतंत्र का जनमत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को मिला था, उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो है लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से इनके खिलाफ मैसेज गया है कि ये लोग जो है सत्ता में आने के लिए इस तरह का काम करते हैं। जहां तक बात है हिमाचल कांग्रेस की, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे लीडर है। ये हमेशा अपने पार्टी के अंदर किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह की नाराजगी चल रही है, किस तरह की आपसी द्वेष चल रहा है, उस पर ये ध्यान नहीं देते। ये इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उनके घर को पत्थर फेंकना, उनके शीशों को तोड़ना, उनके पार्टी के जो पर छिटाकशी करना, कटाक्ष करना, ये भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करते हैं कि जो कांग्रेस के अंदर अच्छा हो उसको बुरा दिखाना है। तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने हमारे 40 एमएलओ में से 6 एमएलओ को जो है भ्रमित किया, प्रलोभन दिए होंगे, कोई किसी तरह का उनको साथ वादा दावे किए होंगे, उसके बाद इन्होंने सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये विफल रहे। इनको लग गया कि अब 34 पे आके उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और जहां तक 6 विधायकों को ले जाने की बात है, ये 6 विधायक इनके गले की फांस बन चुके हैं। ये उनको सेट करने में, उनको बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। Okay, all right. On that note, let's also quickly take a look at what the people of Himachal Pradesh have to say. Let's hear it from them. हमें तो हमारा अपना खुद का विचार भी है और मत भी है। इस बार बीजेपी ही विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा है वो आएगी। अच्छा, तो क्या और लगता पूर्ण बहुमत से आएगी। 400 पार की हमें उम्मीद है। इस तरह की पूरी उम्मीद है आपको? बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे सनातन के लिए बहुत ही बड़ा, ये क्या नाम, जो राम मंदिर दिया है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा है 370-28 है धारा और कश्मीर में, और उसके बाद जो 3 तलाक का है, और इसके बाद आने वाले समय में यूसीसी का भी इसका जो है इसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। बीजेपी की सरकार बनेगी 100%। भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्यों, मतलब कि क्या लगता है? क्योंकि मोदी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे कर रहे हैं, अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? जी। जो भी काम हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है। राम मंदिर जो इतना दिन से संघर्ष हो रहा था, चल रहा था, एक तो सबसे बड़ी मुद्दा था, हैं? कितने हमारे भाई उसमें वो कर गए, ठीक है ना? इस करके एक वो तो मुद्दा हो गया। 370 हटाए, एक जो काम हो रहा है अच्छे ही हो रहे हैं ना। जी, ठीक है ना? बिल्कुल। बाकी अपने भारत को मान सम्मान मिल रहा है, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? मुद्दे तो विकास को लेकर ही रहते हैं ज़्यादातर जी, और कुछ एक हिंदू तबके भी रहते हैं मुद्दे। तो ओवरऑल तो जो विकास का मुद्दा है को लेकर ही वोट डाली जाती है। किसानों का ले लीजिए मुद्दा। हाँ जी। किसान जो है 1500 रुपये आ रहा है अब हर किसान को, और भी है जो अगर नौकरी वगैरह का देखा जाए तो पहले से बड़ा ही है बीजेपी की सरकार में, और कांग्रेस की सरकार में आके तो ये सारी चीज़ें रुक सी गई थी एक बार। All right, so you heard it from the people of Himachal Pradesh on the ground, what their frank and candid opinion is. I'm going to quickly get in my political analysts also now at this point and hear it from them about the situation in Himachal Pradesh and what do you think is going to be the tide? Is it going to be in the favor of the BJP or in the favor of the Congress? Professor G.V.R. Shastri, quickly a word from you, particularly with regards to the survey results that have also come in now. And they are highly, favoring the BJP. Whether we talk about the Modi factor, will it work or not? Whether Prime Minister Narendra Modi has been a performer in his role as the leader of the country, there have been more votes that have come for him. The issue that has been raised as the number one for the people of Himachal Pradesh on the basis on which they will vote is unemployment. Now, in a situation such as this, and when already the previous 2019 election has been won by the BJP in Himachal Pradesh,
Is there a repeat that can be seen in 2024, keeping in mind that the Congress has remained in the back foot? In fact, it has performed worse in 2019 than the performance it did in 2014. See, Meghna, the local issues are completely different from the Lok Sabha elections is concerned, because the people understand and the people have a awareness. If you look at the after 2004 election onwards, people have a clarity about the assembly and the parliament. Earlier, that kind of political maturity was not visible in the ground. Now there is a clear-cut visibility what is parliament, who is parliament member, and what kind of duties they do, and what is that union government that exactly do for them. That is the kind of narration. That narration is already exists in the people's mind across the nation, and people understand this. So earlier, political parties used to get the enjoyment of misuse giving the false narratives about the assembly and as well as the parliament objectives is concerned. But now it is clear. So I am quite clear that there is a clarity, that understanding of the parliament and the working style of the Prime Minister Modi. And the Modi ji has given a correct leadership to the nation. That is what the people feel, and that is the ground reality. And the reality, it is acceptable across the nation. And that is the only reason. It is not that, see, earlier Congress spokesman said that it's a natural calamity. The natural calamity has been completely ignored by the BJP. It's not correct. This is the kind of statements are not at all correct. The central government acted very well, and there is no doubt central government timely help the state and with this much of funds. So they will communicate this kind of narration. That is what they are expert. Okay. But people of the state or people of the nation know about the parliament. So they can definitely accept, if at all they want to accept, because last 10 years, that was the rule of the Prime Minister Modi. And if at all they feel very good, I'm telling you very good, then definitely they'll vote for Prime Minister Modi. Okay. That is the story. Okay, all right. Nikhil, would you like to get into the conversation, particularly when it comes to Himachal Pradesh, vis-a-vis the survey results that we are putting in? There is a sample size of over 2,100 people who have taken this survey in Himachal Pradesh, and on top of it, we have gone on the ground. On top of it, we have gone on the ground, and we have spoken to the people. How do you view this survey versus what the ground reality is? About 60% of the respondents are between 41 to 60 years of age, and about 46% of the people are undergraduates. Yet what turns out is that unemployment is the biggest issue, with 46% of the respondents saying that is the issue for them. Now, if people in that age group are feeling that unemployment is the issue, I can't even imagine what is the feeling between the youth when it comes to unemployment, because time and again, surveys across the country have shown that unemployment is the highest in the youth, and 83% of the graduate youths in this country are unemployed. Surveys have also shown that if you are graduate vis-a-vis if you are illiterate, you have a 9 times higher chance of getting, you are 9 times more unlikely to be unemployed, right? So the point is that when it comes to the issues, this is a national election and national issues will take the forefront, and this government has thoroughly failed on the China border issues. They have failed on the inflation, they have failed on unemployment, which is what your surveys have also reflected. So even though the BJP has been able to create this hawa that we are going to win this election, which is why 60% of the respondents are saying that they might win, but that is not to be confused with 60% of the respondents saying that we will vote for the BJP. So what is happening right now is that I agree with the previous speaker, Professor GVR, that people now understand the difference between an MLA election and an MP election, and they know that they are voting for the central government this time and not the state government. Of course, the good works of the state government, the welfare policies of the Himachal Congress government is going to come into play. But what people will also see is the very unethical, immoral, tukde Rajniti of the BJP, that one day the Prime Minister is saying this person is the most corrupt in the country, and the next day you bring them on board. The BJP spokesperson on this very program said कि कांग्रेस ने 2022 में लोगों को गुमराह कर लिया. सर, अगर कांग्रेस ने गुमराह करा था तो उन 6 विधायकों ने भी मतलब गुमराह करा था. तो ऐसे लोग जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आप आज उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ला रहे हैं?
This is all political rhetoric that the BJP Come engages on, in. let's The also reason that they have let's to also understand that when a political party and the party high command is the one that actually runs the government, whether it is in the BJP or in the Congress. I mean, you are talking about an MLA from Himachal Pradesh, which is a small state. Whether we talk about the assembly elections or we talk about the Lok Sabha elections, and a position of an MLA who is working following the orders and the instructions and the policies of their leaders sitting above them, But and the party high command that is making the decisions for them. Anyway, quickly also let me also get in. I'll come back to you. Let me also get in Piyush Pant. Piyush, can you hear me? Do we have Piyush? Himanshu, but while we try to figure that internet connection with him, Himanshu, how do you view, first of all, the survey result? And I'll again have to say, the maximum number of states that we have surveyed up until now, and we are in the fag end of completing our entire circuit of reaching out to all the states and union territories where the election is going to take place. The vote has been vehemently in majority in favor of the BJP and Narendra Modi. Yes. The last thing is important. Vote is in the favor of BJP because of Narendra Modi. I'll put it that way. It's the face of Narendra Modi that is working everywhere. See, the election result in the results of the surveys would have been something very different. But today, when we are talking of Himachal, let me tell you one thing. This is a small state with just 4 Lok Sabha seats and 60-70 assembly seats. So if at all there will be fight, if at all there is a fight, it will be in such small states. That I do believe. And mind you, MLA election and MP elections are not the same. 14 and 19, people have matured out, and as Mr. Sastry said, I quite agree with him. Very clear with it. That people are smart, they know whom they want to vote. They have a face in front of them and they want to vote for that. The local representative, the local MP bears a little significance. After that, that personality comes in. So here, if I see even that, 2022, this last assembly election, what was the defeat of victory and margin? BJP had the government, they lost, Congress won it, but the margin was not even 0.92%. Chalo. That was the margin. But okay, there was one point that was made by the Congress spokesperson, Mr. Tomar. And he said that, the impression amongst the people about BJP is that it has tried to break the government, it has tried to topple the government by hook or by crook. Because the government that was formed just a year ago, and now there you had it that the number of MLAs ended up defecting. There was horse trading, there was buying out of the MLAs. And this has perhaps not boded well with the people of Himachal Pradesh. Shall I ask you a counter question? Why is it that they have to defect? Why is it that they went to the BJP's lap? Has anybody thought of that? Has the Congress leadership thought of that? Yeah, the Congress says that they've been offered more money. No, more they than have that. perhaps been promised I'll tell you. Better position. I'll tell you one thing. They went there, this is my understanding as a journalist, okay, of 30 years. They went there because they did not want an outsider to be put on their head in Rajya Sabha. They did not want Abhishek Manu Singhvi. Let me be very clear about this. And that is the reason they went. Now today, see, if they are not right, and if people have not accepted it, they are going to go and fight re-election again on those 6 seats. People will defeat them. They'll get the answers. What I'm trying to say is, blaming everything on opposition has become a habit in our democracy for the parties very conveniently. They don't see inwards. Okay. What was the reason? Why is it that Maharani Pratibha Singh had to talk so many things at that time? Why is it that Vikramaditya came out and spoke certain things? Everything is well. BJP tried to bribe with the money. But neither of Pratibha Singh or her son Vikramaditya Singh is still not. They are still part of the Congress.
They have not They're defected still as yet. part of the Congress, but they've Which spoken against the means Congress, right? that the core of Himachal Pradesh Congress still is intact. No, it isn't that. I'm not saying no. That's why first I said, if at all there is going to be a fight for the seats, it's going to be in this state. Because the core of Congress in Himachal is still there, unlike states like Gujarat, where they do not exist. Okay. That All is right. why I said, first thing. Okay, all right. I'm going to again come back to, do we have Piyush Pant on our telecast right now? Okay. Okay, let's quickly take a look at some more of these reactions that are coming in. Some more people that we have spoken to in Himachal Pradesh, and this is what they have to say. 2024 में आप क्या मानते हैं कैसी सरकार होनी चाहिए, कौन उसका मुखिया होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। देखिए पिछले 10 वर्षों में 2014 के बाद अभी जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं उनको डायरेक्ट सुविधाएं भी मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि हमारी ही कंस्टिट्यूंसी में 9,500 किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए हर साल मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख रुपए की एक मेडिकल जो सुविधा है वो आपको सबको प्राप्त हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों को मिलेगी, कांग्रेस वालों को मिलेगी, जो भी इसमें पात्र है उन सबको मिल रही है। और इस तरह की अनेकों सुविधाएं हैं, जैसे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है वो चल रही है। इस तरह से हमारी 17 योजनाएं हैं जो शहरी क्षेत्र में चल रही है और 17 ही योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है उसका लाभ मिल रहा है। और इसमें कोई भी कास्ट बैरियर नहीं है, कोई भी इसमें बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं है। चलिए कांग्रेस से जानने की कोशिश करूंगा। आप मुझे ये बताइए, जैसे इन्होंने बताया 17 योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं, क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? 2004 से 2014 का कार्यकाल अच्छा था या 2014 से 2024 का कार्यकाल में कोई तरक्की हुई है? क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने पहले कहा है, मैं 2004 और 24 की बात बाद में करूंगा, मैं पहले आज की अभी की बात करूंगा। ये अखबार है आज का, इसमें दूसरी न्यूज सुनिए क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैनर अमंग टॉप डोनर्स जो कि अंडर ईडी स्कैनर में थे, यानी कि ये हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़ा सीरियस इशू है। ये देखिए 6,000 करोड़ से ऊपर रुपए का पैसा वो कंपनियां उन्होंने डोनेट किया है भारतीय जनता पार्टी को, जो कंपनियां ईडी की स्कैनर्स में हैं। तो ये कार्य प्रणाली शो करती है कि किस तरह से आप ईडी से और सीबीआई से आईटी से डरवा धमक के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं बोलता हूं कि ये 6,000 करोड़ का जो पैसा कलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस पैसे से ये बड़े बड़े आलीशान अपने ऑफिस बना रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज तक का इस देश की हिस्ट्री में इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हुआ। Okay, so one of the local people being extremely vocal against the BJP, targeting the BJP, saying that the BJP has allegedly used all the investigative agencies. It has used the IT department to collect money, to force people to cough up money. And that's how BJP leaders have allegedly been making big bungalows and living a lavish life. So Vivek Sharma, that has also been a big critique by the opposition, by the Congress, by Aam Aadmi Party, by the TMC, that you are using these investigative agencies, the IT department, income tax department, and they are all working at your behest to attack the opposition leaders. मैं पहले जो हिमाचल के संदर्भ में है, मैं आपको 2 मिनट उस पर मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं आपका इस विषय का भी जवाब दे दूंगा। इन्होंने कहा तोमर साहब ने कि 5 गारंटियां हिमाचल प्रदेश में पूरी हो गई। इन्होंने एक सिंगल गारंटी पूरी नहीं की। इन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष हम 1 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। इन्होंने एक सिंगल रोजगार नहीं दिया 15 महीने के कार्यकाल में। इन्होंने कहा था कि हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। इन्होंने 1 किलो गोबर नहीं खरीदा। इन्होंने ये कहा कि हम दूध का समर्थन मूल्य देंगे 100 रुपया प्रति किलो। ये 45 और 55 का समर्थन मूल्य केवल बजट में दिया है, एप्लीकेबल अभी तक नहीं हुआ है। 1,500 रुपया महिलाओं को देने की गारंटी की थी। 15 महीने में लगभग 22,500 की देनदारी प्रति महिला की खड़ी हो गई है, जो हिमाचल प्रदेश की लगभग 22 लाख महिलाओं की गारंटी है। इन्होंने कुछ नहीं किया। रहा सवाल राहत का, जो आपदा आई, हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र ने 18,000 करोड़ रुपया आपदा राहत कोष में दिया।
लगभग 15 महीने में 33,000 करोड़ की योजनाएं इनको दी। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने 15 महीने में 1500 करोड़ रुपया ऋण ले लिया। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कुछ नहीं किया और ये बजट के समय ही सरकार गिर गई थी। अगर ये 15 विधायकों को मार्शल्स के माध्यम से इन्होंने बाहर निकाला तो उन्होंने अपना बजट पास करवाया है। ये रहा सवाल इस बात का। अब आपके विषय पे आ जाऊं, जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वो बात कर रही है जिनको इस बात के लिए जाना जाता है, ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। इनके कार्यालयों से तो नोटों के बैग गायब होते रहे, इनके सचिवालयों से अटैची चोरी होते रहे नोटों के। अरे भाई, आज कम से कम आपके पास जानकारी तो उपलब्ध है कि पैसा कहां से आ रहा है, किसके यहां से आ रहा है, इस पर चर्चा हो सकती है। और रहा सवाल इस बात का, अरे इन्होंने, और रहा मैं ये भी निखिल जी के पर भी विषय पर भी आना चाहता हूं। मैं निखिल जी की जो स्मेल आती है वो कम्युनिस्ट स्मेल आती है उनके भाषणों में से, उनकी बात में से, उनके वक्तव्य में से। ये अति चिंता की बात है। आप देश को जब भी कहीं विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, और मैं इसमें डॉक्टर जीवीआर ने जो विषय लिया, कांग्रेस नैरेटिव नहीं फिक्स कर पा रही हिमाचल में। इनको स्टेट का नैरेटिव फिक्स करना है या इनको सेंट्रल नैरेटिव फिक्स करना है। हम कहते हैं ये जनधन योजना 47 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर लगभग 47 लाख महिलाओं के साथ साथ प्रत्येक महिला को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिली है। डीबीटी के माध्यम से 75 करोड़ लोगों को पैसा हुआ है, जबकि राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते थे उसमें से। सरकार तो इन्हीं की होती थी तब, किसी और की तो होती नहीं थी। हालत इनकी है, किसान सम्मान निधि में 11.78 करोड़ छोटे किसानों को राहत मिली है। प्रश्न यह है कि इनके पास नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव फिक्स करने के लिए हम तो कहते हैं 370 पे बात करें, हम कहते हैं राम मंदिर पे बात करें, हम कहते हैं नेशनल हाईवे पे बात करें, हम कहते हैं IIM पे बात करें, ITIs पे बात करें, वंदे भारत पे बात करें, IIIT पे बात करें। ये बात नहीं करना चाहते। कारण यह है, कांग्रेस अभद्र टिप्पणियां कर रही है। हमारे प्रत्याशी, जहां से आपने प्रारंभ किया था मंडी से, कंगना जी के ऊपर ये ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर नहीं है। और दुर्भाग्य है कि जो लोग अपना ट्विटर नहीं चला सकते, वो लोग देश चलाने की बातें करते हैं, कहते हैं कि और कर गया। अरे कमाल है, आप अपने ट्विटर हैंडल करने की क्षमता नहीं रखते हैं। GS Tomar, would you like to retort to what Vivek Sharma has said, that the Congress does not have a narrative to weave for the people to then be convinced to vote for you? Thank you very much. You give me a chance to speak something. देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के 2 बार पूर्व में मुख्यमंत्री हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल जी ने खुद कहा है कि लाहौल स्पीति से जो है 1500 रुपए महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि देने की काम शुरू हो चुका है। ये पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार प्रेम कुमार जी ने कहा है। देखिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पूरी बात। मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मेरी बात सुनिए। शांता कुमार जी 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के बड़ा नेता है। उन्होंने कहा था कि जो प्रदेश में भाजपा तोड़ फोड़ का काम कर रही है वो अच्छी संस्कृति नहीं है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में खड़े होकर यह कहा था कि अगर किसी को पेंशन चाहिए तो वो विधानसभा का चुनाव लड़े, ऐसे पेंशन किसी कर्मचारी को नहीं मिलेगी। प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह ने पेंशन देने का काम किया है। 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो गई है। दूध का भाव बढ़ा गया है, प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया है। केंद्र सरकार की प्रपोजल है, विवेक जी सुनिए आप लोग, कांग्रेस सरकार ने स्टार्टअप योजना शुरू कर दी है। स्टार्टअप योजना शुरू कर दी है, वो उस पर भी बात की जाए कि स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा के लिए दिए जा रही है। जहां तक बात इन्होंने कही, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। जितना भ्रष्टाचार जयराम ठाकुर के राज में 5 साल हिमाचल में हुआ, जो एम्प्लॉयज सिलेक्शन कमीशन है हमीरपुर में, वहां पर पेपर लीक हुए, बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी गई, बैकडोर एंट्री की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब आए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भंग किया। वहां पर नई तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ जो है कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है। ठीक है, ओके तोमर जी, आपने you've spoken your mind. You've put your opinion. Quickly, sir. Quickly, Vivek Sharma. Quickly, 30 seconds. I'll go to the rest of the panelists.
जिस चयन आयोग की बात कर रहे हैं उस चयन आयोग को ये दोबारा बना नहीं पाए। 15 महीने में 11 बार इनकी फाइल टर्न डाउन हुई है मुख्यमंत्री के ऑफिस से। ये उसमें ऐसी क्या स्कीम लाना चाहते हैं, वो जो स्कीम यूपीएससी से इंस्पायर्ड होकर आएगी ना, ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि 11 बार इनकी फाइल टर्न डाउन हो गई, उसको दोबारा बना नहीं पाए अभी तक ये। इसका स्पष्टीकरण दे कांग्रेस। ओके, ऑलराइट। इलेक्शन कमीशन काम करना शुरू कर रहा है। आप देखिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो काम करेगा और भविष्य में जो है घोटाले नहीं होंगे जो जयराम ठाकुर के टाइम में जो घोटाले हुए। Okay, all right. Let me. So while we have the spokespersons bickering amongst themselves, obviously putting their point of view, Professor G.V.R. Shastri, there were these issues that were specific to Himachal Pradesh, particularly opposition parties. And in Himachal Pradesh, the Congress have come out opposed to the Agniveer scheme. That has been a contention point both in the assembly elections and it has been raised in the Lok Sabha election campaigning as well. So, do you think this is going to be a factor? No, there is actually, if you look at the Himachal Pradesh, the core issue is creation of infrastructure. The creation of infrastructure. The creation of infrastructure itself, it creates employment, everything. So the Congress party, which is ruling party, the Congress party at the moment ruling party and the state, and they do understand the boundaries and the limits of the entire Himachal Pradesh is concerned. That spokesman is not even talking a sentence about the infrastructure creation, which is there are so many villages, he is not even, still not connected to the mainstream of the nation. So they are not talking about that. They are talking about the electoral bonds. Yes, electoral bonds. What is wrong? So why you have not opposed this act? Congress party is not opposed to act this in the parliament. Why they have accepted even single penny? They would have not accepted. Then they would have told the BJP is chore. They have accepted the money because they couldn't get that much money. They couldn't get that 6,000, 7,000 crores money. Why you have accepted it? When you are in principal narration, there is no principal Professor narration. Shastri, I'll have to interrupt you. I would request you to keep your camera away from the phone because, we're not able to frame your face properly in front of the television screens. Meanwhile, I'm also being joined right now by Piyush Pant. He's a senior journalist. Piyush, how do you view which are the key issues that both the Congress and the BJP are fighting this Lok Sabha election in Himachal Pradesh? Who, according to you, is going to sweep the state of Himachal? Of course, BJP has the advantage and they have been doing well in all the previous elections. Congress is very weak, organizationally, leadership-wise also. There is a lot of discontentment in the Congress, as we had seen during the time of the Lok Sabha elections. Six MLAs defected. They didn't vote for the Congress candidate. Even now, the state chief and the present MP from Mandi, Pratibha Singh, she was reluctant to fight the election. She had refused it. But now, now news is coming that since BJP has put Kangana as the candidate, now she is planning. She has given a feeler to the Congress High Command. Yes, she is ready to fight the election because she considered Kangana a very, very weak candidate. But otherwise, BJP is well settled in Himachal Pradesh and they have got a very active organization and they have been winning right from the 2009. 2009, they are winning all the 4 seats. Except 1 year when Congress won the 1 seat, and in 2021, Congress won this Mandi seat as in a by-election. So I think whatever their, so both as far as the percentage of vote is concerned, they are always neck to neck, whether it is a Lok Sabha Chunav or it is assembly election. But BJP is always ahead as far as the seats are concerned. Okay. So I think Okay. this time also they are going to sweep this election. Nikhil, would you like to comment on what Piyush Pant has said in terms of the analysis that he brings out?
earlier point was made about how there was the vote share difference during the 2022 Vidhan Sabha elections was minimal. So I'll bring out the point on vote share. The Congress in 2019 Lok Sabha elections got 27.3, 2014 41%, 2009 45%. So it's not like the Congress is not there. To claim that the Congress has no foothold in Himachal doesn't make sense at all. So far as the Mandi candidate is concerned, of course, we've seen the kind of things that Kangana Ranaut has been going around saying देश को 2014 में आजादी मिली थी. Bose was the first prime minister of the country, which Bose's grandson had to come out and correct her on. That's the kind of candidates that the BJP is putting for the people of Himachal. But what really matters to the people of Himachal, see, that's a state that's intrinsically, and I'm sure Tomarji and Sharmaji would both agree with me on that. That is the state that is intrinsically connected with the armed forces. Too many people from the state go into the armed forces. Too many people live in the state after they retired from the armed forces. And what the BJP has done in bringing out the Agniveer scheme, compromising the national security, compromising the integrity of the army, as well as taking away these permanent jobs of Jawans from the people of Himachal as well as the people of India, that is something that's going to give them a major hit. And so far as electoral bonds are concerned, of course, every single party has gained from that, including the Congress. But the problem with the BJP and the electoral bonds is the hafta wasuli that they were carrying out with it. 4,500 crores. I think the BJP has gotten from those companies which were under ED raids. So many of the ED raids, people were being raided by the ED, but when they give money to the BJP through electoral bonds in a completely opaque manner, then the raids simply go away. And Sharma ji was saying, "Aaj humne electoral bond banaya, to aap kam se kam dekh to pa rahe ho." So the stand of your government before the Supreme Court was that the voters of the country have no right to know who gave how much electoral bond to which party. So don't say it is something of your doing. It is squarely the Supreme Court, and that too your government tried to stall the Supreme Court, committed perjury in the Supreme Court, that in February your SBI was telling the court that we need till 30th of June to collate the information. But when Supreme Court did not take that lightly and ordered the SBI to give the data, they gave the data in a completely haphazard manner, and it took a couple of hours for independent journalists to collate that data. The electoral bonds, and previously the method that was utilized to tell the public, or the lack of knowledge that the public had about the kind of amount of money that was going to political parties, was still opaque. So whether it is the Congress or the BJP, the problem of opacity continues to remain. The people of the country continue to be ignorant of what happens behind closed doors. No. This was the first time when money being paid by companies and corporates was made opaque. Because earlier, before this electoral bond regime, whenever a company wanted to give money to any political party, first of all, they could not give more than 7.5% of their profits, unlike the cases that we are seeing now, that loss-making companies are giving tens and hundreds of crores to the BJP. Number two, the company would have to reflect the money that they've given to a political party and which political party, and the political party would have to reflect which company they've taken how much money from. Okay. This is the first time that the banking channel was used and made an opaque system was created. So far as cash-based opacity is concerned, would you like to comment on what Nikhil has said? Particularly, he's raised 2 points. He's raised the point of Agniveer scheme, which the Congress has vehemently rejected. And according to him, it is the people of Himachal Pradesh who have also rejected it. And talking about the electoral bonds and the opacity that at this point of time has been raised by the Supreme Court as a major issue for the electoral bonds scheme, of the electoral bonds policy of getting funds into the political parties' kitty, that has now at this point of time been stopped. See, it's very easy to talk about. Talking eloquently doesn't make you correct. See, the problem here is, when we are talking of Agniveer, now it's, one party is tom-tomming it. Let them tom-tom it. But actually what is happening on ground will be realized. Because, see what's happening, on one side you yourself say, in last 3 elections, your vote share has been continuously decreasing. From 42%, it has come down to 27% according to your own figures. That's one thing. And still, when you want to attack, you want to believe that you are the superior race in a political spectrum, which has not been the case. In Agniveer case also, see, once people get, washed out, एक बार होता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं. Let me make it very clear for the spokespeople. बार-बार नहीं होता. यही बात electoral bonds के लिए भी है. It is for electoral bonds also. See, with the 303 MPs, 18 state governments, if this guy gets 600 plus crores, what is the problem? When you with three states,
and what 50 MPs. The Grand Old Party also gets 1400 crores. What is the exact percentage? The total electoral bond money is more than 12,000 crores, and you are getting 10% of it when you do not have the total 10% representation in the elected members. That is what people have decided. And that is what is reflecting when the bonds figures are coming out. So opposition, when they talk of it, a TMC has merely 23 MPs. And one state government, they get 1,300 crores. DMK, just one state and 22 MPs, get 1,200 crores. And from whom? From whom? We all know that. Okay. So it's, very nice to make an election point, talk about it, try and change people's mind. It doesn't happen that way. Okay. People so are Piyush, very clear. Fair enough. And for the first time. Okay, you made your point. Piyush, I'm going to come to you. So, are people, when Arvind Kejriwal gets arrested, when the Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren gets arrested, or the corruption charges, are people accepting that there is the Enforcement Directorate and there is the CBI who's doing the right job, and there is money that has been hidden, that there are corruption charges, and there are right corruption charges against these leaders who have been put behind bars now? Well, the way it is being done, the way all the leaders of the opposition parties, maybe there are enough evidences against them, but a sort of message is going on, because with the speed and the way all the opposition leaders are being arrested, only ED and CBI work investigating them only, corruption charges of them only. So this is somewhat giving an impression to the people also that there is something wrong, something partisan, something it is political vendetta. Yeah. Though the people are there, of course, they will accept it, and they have been in the past accepting, yes, you are doing corruption, so you are behind the bars. But the way it is being utilized, agencies are being utilized, and with the speed they are being utilized and the timing with they are being utilized, it is giving a sort of impression to the people also. If we talk to the people also, so they say, yes, they are being misused. Okay. So this impression is certainly going on. Okay, all right. I'm out of time, but I thank all of you for joining me on the telecast. Stay tuned on NewsX. And let me remind you that every day, 7 p.m., we bring you a state and an analysis and the survey that happens on the ground on who's winning 2024, powered by Statistically Speaking. Thanks for watching. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.